I'm a mom. I'm a mom to single mom to my son Lennon, who is an inspiration to me every single day. As a mother, all women know as a mother, as an aunt, you want the best for the next generation. You want to make it easier for them. And as a mom now in this leadership position and getting this recognition, he is seeing what is possible for women to achieve. And I think that is what is game changing. That is the generational shift that's necessary, which is why this acknowledgement from Municipal World, Municipal World is so important to me personally, but also for the City of Brampton. मैं हूँ आज की नारी, अबला नहीं हूँ चिंगारी। मेरी चुप्पी की कमजोरी ना समझो, मुझे अपने ही समान समझो। महिला सशक्तिकरण को महिलाओं के आत्म मूल्य की भावना, अपनी पसंद निर्धारित करने की उनकी क्षमता और अपने और दूसरों के लिए सामाजिक परिवर्तन के प्रभावित करने के उनके अधिकार को बढ़ावा देने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं उन महिलाओं की कहानी जिन्होंने समाज की बेड़ियों की परवाह करे बिना अपने आप को साबित किया और देश और कम्युनिटी का नाम रोशन किया है। म्युनिसिपल वर्ल्ड ने ब्रैम्पटन शहर के वार्ड 1 और 5 की क्षेत्रीय पार्षद रोवेना सेंटोस को म्युनिसिपल वर्ल्ड के वुमेन ऑफ द इन्फ्लुएंस इन लोकल गवर्नमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है, जिसे कम्युनिटी में काफी हर्ष और उत्साह है। अपनी कहानी को बयान करते उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की। That comes straight from how I was raised and the values of my grandmother, who first came and immigrated to Canada from the Philippines. You know, my parents came from the Philippines in the 1970s and they moved into the area of Jane and Finch. My father worked 2 to 3 jobs. My mother worked and my grandmother helped to raise me at that time. And they saved enough money by working so hard to buy a house in the city of Brampton when Beauvais was just a dirt road near Professor's Lake. And at that time, it was such a new world of opportunity as more immigrants were coming in. But racism did exist when I was growing up. And I remember being teased for looking the way that I did, looking very different. My family suffered through a lot of work and a lot of hardships, but we pushed through. And then I was able to achieve my undergraduate degree in business. And then I was able to achieve my master's degree in the London School of Economics. I'll tell you what though, it was a lot of student debt because at the time my parents couldn't afford to pay for all of my education. And so I had to take on a lot of student loans. And when I graduated, I was very fortunate enough to get really good jobs in the private sector, the nonprofit sector, and then eventually at Queen's Park for about 12 years. But even with a really good salary, because I was in so much student debt and I was a single mom and I was paying for childcare, I was really struggling still to get by. And so I think that connection and those personal experiences coming from an immigrant family, being a single mother, working really, really hard and still having a hard time day to day is what connects me so deeply with the community here in our city. रोवेना एक गौरवान्वित ब्रैम्पटोनियन हैं जो समुदाय से प्रेरित हैं और राजनीति की संस्कृति को बदलने और अधिक समुदाय रहने योग्य और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में जुनून प्रेरित हैं। वह 2018 में चुनी गई और ब्रैम्पटन की काउंसिल के लिए चुनी गई पहली फिलिपिनो हैं। निर्वाचित होने से पहले उन्होंने 1 दशक से अधिक समय तक ओंटारियो के विधायकों के साथ काम किया, हाल ही में एक निर्देशक के रूप में और जीटीए में अनगिनत युवाओं को राजनीतिक रूप से सक्रिय होने के लिए सलाह भी दी है। Women are very important in terms of representation because we bring a different voice, a different perspective, and we challenge the status quo. When you look at all levels of government, really the entire system was developed and created by men. And when that happens, when there's only one perspective that creates those policy, well, guess what? You lose out in terms of the other interests or the other needs that aren't represented at the table. And so when you have more women or more diverse women at the table, you have the perspective of moms and what it means to have unaffordable childcare. You have the perspective of different cultures, but as women, you also have the perspective of, for example, menstruation products. Why are we paying for menstruation products when, it should actually be free? And we created policy at the City of Brampton to make all our facilities provide free products for women to use during their menstruation.
These are the things that men don't want to talk about, quite frankly. And when you have more women and diversity at the table, your policies become stronger and more representative of the community. ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। मैं आप एक माँ आ, मेरी बेटी खैर इस टाइम इंडिया वा, बट जिन्नी सपोर्ट मैनू काउंसलर रवैना सैंटोस ने दी है और बाकी जो स्टाफ मैंबर आ एंड इत्थे जिद्दां तुसीं आप ही देख रहे हो कि काउंसलर नवजीत कौर बराड़ वो भी अपने सिटी ऑफ ब्रैम्पटन च हैगे आ ते ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। It's incredible to be able to support women in politics. It's something where women are still extremely underrepresented in political spaces, particularly at a municipal level. So to be able to gather with other incredible women together to celebrate an incredible leader, it's really powerful. I think just as women, just our spirit and our drive, the nurturing part of us brings so much to politics. And as women, we run our homes, we run our families, we run our businesses. We're the ones that really get it done. And with Councillor Santos, she is the best example of that as a mother, as a friend, as a daughter, and really making huge changes for the city of Brampton. ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਚ ਬੇਸ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਸੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। मैं नारी हूँ, मैं नारी हूँ, मैं जग जननी सब पर भारी हूँ, दुनिया का मुझको डर नहीं, मैं झांसी की रानी हूँ। ब्रैम्पटन से तरुण पॉल सिंह।